तो डियर स्टूडेंट, मेरी आज की ये वीडियो इंटरमीडिएट पार्ट 1 ICS के कंप्यूटर पेपर के गेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल तालीमी राब्ता में न्यू है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरे तालीमी राब्ता चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला है कि मेरी आज की वीडियो इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के पार्ट 1 यानी ICS वालों के लिए है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए, हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गेस्ट 2022 है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह पर यकीन रखते हुए आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। What is a computer? Define data and data processing. Define information technology. Define the term global village. तो स्टूडेंट, मैं जरा फास्टली रीड करता रहूंगा। ये आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर करके देखना है, क्वेश्चंस लिख लेने अपने पास या स्क्रीनशॉट ले लेने आपने अपने पास, ताकि आपको जैसा इजी लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर लीजिएगा। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको जरा फास्टली पढ़ूंगा। What is digital convergence? Define digital camera. How is printer resolution measured? What is the use of MICR? Describe pilot conversion. What is feasibility study? What do you mean by quality? What is a joystick? Define the term computer word. Define work group and groupware. How is the use of internet affecting our society? What is a CSMA CD? Define and differentiate between ISDN and DSL. What do you mean by CSMACR? Define dedicated server. Like as आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि define dedicated server, define file server, define data server. ठीक है, define network server, define news group server, define host, define server, client computer. Differentiate between downloading and uploading. Write short note on TCP/IP. इनकी एब्रीविएशन भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्राइब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन कहते हैं, लैन, मैन, वैन। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? डिफाइन एम्पलीट्यूड, एक्सप्लेन द टर्म बेस बैंड, बैंडविड्थ, लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ मॉडेम, व्हाट इज मेल मर्ज, व्हाट इज ऑफिस automation. Describe the simulation in computer field. What is e-commerce? Describe the services commonly used in e-commerce. What is cyber banking of e-banking? What do you know about robot? Define monitoring system in hospital. How computer can be used in marketing? Differentiate between CAD and CAM. Define the term video conferencing. Email advantages, limitations of email. What is motherboard? Compare compiler and interpreter. Define stack. List out the name of general purpose registers. Describe fetch, decode, execute cycle of CPU. Differentiate between RAM and ROM. Differentiate between interpret and DMA. Define EPROM and EEPROM. Describe the purpose of segment register. What is register? Write main categories of registers. Write about biometrics. Define backup. Give some examples of latest antivirus software. What do you mean by computer security? Write the benefit of password. What is copyright? What is a password? What is privacy? How is data privacy ensured? Describe operating system, kernel. Define the term plug and play. Explain one of them. Explain the following terms. My computer, recycle bin and desktop. Define control panel, Windows Explorer. Give some examples of GUI, graphic user interface, operating system. What is the processing? The processing हो गया, processing है. Define cryptographics. Write shortcut key to print document. Define the term WYSIWYG.
इसको आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज द क्लिपबोर्ड यूज्ड, एक्सप्लेन अलाइनमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, शॉर्टकट कीज ऑफ अलाइनमेंट, एक्सप्लेन द टर्म गटर, व्हाट आर अ हेडर एंड फूटर इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, व्हाट इज एन इंडेंट, differentiate between worksheet and workbook, differentiate between active cell and passive cell, distinguish between formula and function, list two benefit of spreadsheet, define the world wide web, www and a web page। इनकी आप डेट भी याद कर लीजिएगा किसने और कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। What is DNS addressing, briefly describe an IP address, define internet, list four search engines, list name of some popular web browser, differentiate between URL and website, explain news group, describe various mouses events or keyboard events, differentiate between word processor and text editor, what are the two basic purpose of an operating system, differentiate between multitasking and multiprocessing, distinguish between single user and multi-user operating system, differentiate between boot sector virus and Trojan horse virus, write the name of the basic element of data communication INQS, INQOS, differentiate between parallel and serial transmission, differentiate between synchronous and asynchronous transmission, what are various types of data used in a data communication system। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 95 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। ये भी तकरीबन थोड़े ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि तालीमी राब्ता चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक देखा करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप देखेंगे तो भी आपका फ़ायदा है, नहीं देखेंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ बनाते रहा करेंगे। तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन कीबोर्ड। कीबोर्ड को आपने एक्सप्लेन करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस मीन आपका जॉयस्टिक आ जाता है, पाम माउस आ जाता है, माउसेज आ जाते हैं जिससे हम मतलब यूज करते हैं, मतलब जिससे हम इनपुट देते हैं, तो वो डिवाइसेस की बात कर रहा है। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइसेस, इनपुट में बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं जिससे हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। व्हाट आर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, direct input devices, explain different types. What are printers? Briefly explain their various types, impact printer और non impact printer। यहाँ उसने बता तो दिया कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट करना, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं कि आपको ये दे दें, आपको खुद याद होने चाहिए कि प्रिंटर्स की कौन कौन सी टाइप्स है। डॉट प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो आपको खुद याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इम्पैक्ट में कौन से और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डिस्क्राइब द OSI मॉडल, आल्सो डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। डिस्क्राइब द टोपोलॉजी, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड इट्स टाइप्स, प्रोटोकॉल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब द ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवेज। व्हाट इज डाटा कोडिंग, डिस्क्राइब वेरियस डाटा कोडिंग schemes, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर सिग्नल, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल, ब्रीफली एक्सप्लेन कॉमनली यूज्ड अनगाइडेड मीडिया चैनल्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन दिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। लेकिन जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है वो आपने मस्ट करना है, उसको लाजमी करना आपने। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड देयर बेनिफिट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक भी बन के आ सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट बसेस इन द बस इन इंटरकनेक्शन, तो बसेस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसेस हो गया, पोर्ट्स हो गया है, टोपोलॉजीज और जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड डिस्कस इट्स टाइप, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। व्हाट इज अ ट्रांसलेटर, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। What is a computer virus? What are the causes of computer viruses? What is data security? Briefly discuss different security threats to data security. Important question है, आजकल पाकिस्तान में डाटा सिक्योरिटी या डाटा सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड काफी हमारे पास जो है वो केसेस आ चुके हैं, आप देख लीजिएगा, इनको भी इम्पोर्टेंट है। गिव अ कंपैरिजन ऑफ GUI एंड कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। Describe various objects window operating system. Define graphs, charts, explain elements of charts, history of internet और explain birth of internet आ सकता है, देख लीजिएगा इसको। Write a procedure to change screen saver. Write a procedure to draw borders around the paragraph. Write a procedure to change paragraph spacing in MS Word. Write a procedure to insert column before column ID and row before row column. Write a procedure to add 5 numbers in MS Excel. Write the steps to rename program on start menu. Write down the steps, cut, copy and paste. तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप देख लीजिएगा, आपके प्रैक्टिकल्स के लिए आपको फायदेमंद होंगे। वैसे भी अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद है इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो फर्स्ट है ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द पैराग्राफ। सेकंड है कैलकुलेट द स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट। नंबर 3 है राइट द स्टेप टू ड्रॉ अ चार्ट ग्राफ इन वर्कशीट। नंबर 4 है राइट अ प्रोसीजर टू चेंज डेट एंड टाइम इन विंडोज। 5 है write the procedure to make text bold, underlined and italic using keyboard in MS Word. 6 है write a procedure to insert new sheet in MS Excel and rename it to my sheet। यानी कि आपने एक शीट बनाई है एक्सेल के अंदर, उसको आपने रीनेम करना है और रीनेम करने के बाद आपने उसको नाम देना है माई शीट। एंड डिलीट द इंसर्ट शीट, और उसके बाद उसको डिलीट भी करके दिखाना है। राइट द प्रोसीजर टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन MS Excel। एक्सेल के अंदर आपने 2 नंबर्स को डिवाइड करना, कोई भी नंबर आपको वो दे देंगे या आपको कह देंगे कि आप खुद से 2 नंबर ले लें, उनको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। नंबर 8 है डिस्कस डिफरेंट इवेंट्स ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। नंबर 9 है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ एडिटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। राइट द प्रोसीजर फॉर रोटेटिंग टेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेना है, अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हुए। अल्लाह पाक पर भरोसा रखने के बाद आपने मेरे इन गेस्ट पर भरोसा रखना है। इंशाल्लाह 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 अगर आप इन गेस्ट पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आप 100% मार्क्स अपने कंप्यूटर साइंस के पेपर में ले सकते हैं। ये मेरी आपको 100% गारंटी है और मेरे ये गेस्ट पंजाब बोर्ड्स के तमाम तलबा और तालिबात के लिए है। तो दुआओं में याद रखिएगा, कीप सपोर्ट माई तालीमी राब्ता चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।